So, very good evening to all of you. I am Praveen and I am again here with the part 2 like trigonometry, and in this class we will discuss about the important question. Those are basically important for the criteria of your half-yearly and as well as your main examination. Okay, so in this class we will discuss some important question of trigonometry chapter related to your part A section, A short type question, MCQs question, fillers, and as well as with your one liner and short type of an ऐसे type of question. Okay, so अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, सो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंदर जितने सम्स और क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस में करा रहा हूँ, तो कृपया करके आप उनका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाए और आपके एग्जामिनेशन के क्राइटेरिया से ट्रिग्नोमेट्री के ये इंपॉर्टेंट सम है. सो प्लीज यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय मी इन दिस वीडियो. ओके, सो यू आर गोइंग टू स्टार्ट our today's important question for your board examination like 2023 and 24. Okay, so the first question all you are seeing on your screen is your like जैसा कि आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन में विजिबल all you are seeing there. Here we have the question is on your screen like having. Okay, read the question. uh, if the shadow of a tower is equal to its height and the length of elevation of a sun will be, कितना होगा length of, मतलब बताया गया है कि एक टावर है जिसकी शैडो जो छाया है उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो उससे बनने वाला जो एंगल ऑफ उन्नयन कोण है वो कितना होगा. यू हैव टू फाइंड द एंगल लाइक ए बी सी एंड टी. सो फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन इज एक्सप्लेनिंग और डिस्क्राइबिंग. इन द क्वेश्चन वी आर सीइंग दैट द शैडो ऑफ अ टावर, जस्ट अ मिनट. Okay, in the shadow, oh, okay, in the shadow of a tower is equal to the height. Okay, so you can say this one is your triangle, like triangle A, B, and C. And if you are seeing that tower, this AB is your tower. Okay, आप इसको टावर बोल सकते हैं और ये इसका शैडो है, तो सिंपल टावर होगा, वर्टिकली होगा और शैडो ऑलवेज आपका लाइक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगा. ओके, सो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, आपको क्वेश्चन में सब कुछ मेंशन है. यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन लाइक द मीनार की ऊंचाई उसकी द शैडो ऑफ अ टावर इज इक्वल टू, जैसे कि हाइट की हम बात करते हैं तो वो स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, और जो शैडो है वो एज वेल एज अगर आप उसको एक्स सपोज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट गिवन है क्या, इक्वल टू द हाइट ऑफ, मीन हाइट देखना है सॉल्यूशन. इफ हाइट इज इक्वल टू शैडो. ओके, तो अगर यहाँ पर आप हाइट को लेट सपोज एच मानते हैं तो शैडो भी आपका एक्स हो जाएगा. देन दोनों आपस में इक्वल है तो एच इज इक्वल टू एच हो जाएगा. ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है. नाउ इन दिस केस जैसा कि आपको दिख रहा है, अगर ये आपका एच है तो ये भी आपकी टर्म क्या हो जाएगी, एच. ये भी आपका एच हो जाएगा और ये भी आपका एच हो जाएगा. और बात करते हैं हम परपेंडिकुलर और बेस की. जैसा कि आपको पता है तो tan थीटा के केस में ही आप कंसिडर करते हैं P अपॉन बी परपेंडिकुलर और बेस. तो थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. देन tan थीटा इज इक्वल टू perpendicular is your h and base is again is your h. So h will be cancelled, then you got like tan theta. Then tan theta is equal to 1. और थीटा की वैल्यू tan में 1 सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री एंगल पर ही होती है. So is it clear to all? थीटा विल बी और 45 डिग्री. क्वेश्चन जैसा कि दिख रहा है आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन है, बट यू हैव टू सॉल्व इट. ओके, बिना सॉल्व करे आप इसका आंसर नहीं कर सकते हैं. सो लेट मी मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस. सी, here we have a question like cos, just a minute, you are seeing the question. Okay, the cos square theta plus sin square theta is equal to what will be the value. जैसा कि अगर आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, अगर ध्यान होगा तो, that you all know that what, sir, we know that sin square theta plus cos square theta is equal to always 1. This is a standard identity that we have to follow. Okay, so but in this case like
just a minute. Okay, see, sin square theta plus cos square theta is equal to 1, but in the case both have the value for theta is always equal to 1, then you got the answer cos square theta 60 plus sin square 60 degrees equal to 1. That will be the answer. But if you are using your trigonometric table, then you have to place the values like theta is equal to 60 degree. Okay, so the first is your cos square 60, then the value for cos square 60 1 upon 2, and square is your 1 by 2, and sin 60 is your root 3 by 2 whole square. Okay, so now place 1 square is your 1 and 2 square is your 4, root 3 square is your 3, and 2 square is your again 4. Now you will take the LCM of denominator 4, then 1 plus 3 is equal to 4 by 4, again cancel, then you got 1. So in both case you got the answer like 1. Okay, so I think it's clear to all. ये क्वेश्चन सेकंड आपका है और सेकंड का सेकंड पार्ट है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है फिलर्स की केस में. ओके, सो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन जैसा कि आपको दिए हुए हैं, so you have to solve all the questions very well. Okay, so let me move on the next question. See, 6 meter. Okay, if the shadow of a 6 meter high pillar is 2 root 6, okay, 2 root 3. जैसे कि आपको दिया है कि शेडो ऑफ अ 6 मीटर हाई पिलर, एक हाई पिलर है, जो पिलर गिवन है, पिलर आपका वर्टिकली होगा, श्योर है, देन यू हैव टू नेम द गिवन फिगर लाइक ए बी एंड सी. आप इनका नेम दे देते हैं. शेडो है 6 मीटर हाई पिलर की 2 root 3, ये इसका शेडो है. शेडो आपको पता है ऑलवेज शेडो लाइक आपकी हॉरिजॉन्टली होगा, और पिलर और पोल आपका वर्टिकली होगा. राइट, इज इट क्लियर? जस्ट अ मिनट. Okay, so see, if the shadow is your like 2 root 3 meter, okay, and 6 meters height of a pole is your 6 meter height for this pole. Okay, from like AB is your 4. Okay, so the angle of elevation from the sun will be, then you are going to find the value of theta. Okay, सो अगेन सॉल्यूशन, ये जो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपका 9th प्लेस पर आता है. सेम एज इट इज क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और आपको सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी होती है. सो इन दिस केस आपसे पूछा गया है कि वैल्यू फॉर थीटा, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, दिस वन इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज योर बेस. सो इन द पी एंड बी, जैसे कि आपने स्टडी किया होगा, दैट यू ऑल नो, पी बी, पी एच बी. ओके, Pandit Badri Prasad Har Har Bhole. Okay, so this one is your tan theta. P and B always comes in P and B. Then you can place like tan theta is equal to P upon B. Okay, so you are going to find the value for theta. Then you can write as it is theta here. What is the value for P? P is your 6 meter, and what is the value for B is your 2 root 3. Okay, so let me move on the next. Tan theta is equal to 2 3s are 6. Okay, and you got like 3 root 3. Okay, you can just denote this 3 is your root 3 multiplication of root 3 upon root 3, because 3 जो है वो आपका 2 roots, मतलब root 2 multiply root 2 is your 3, then 1 root will be cancelled, then you got root 3. Okay, tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3, और रूट 3 tan के केस में आपका सिर्फ और सिर्फ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पर बनता है. सो योर आंसर विल बी 60 डिग्री. तो बनने वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. Is it clear to all? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज ट्राई कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा, सो यू विल बी गेट द मोर convenient or best result after the examination. Okay, so another question is on your screen. This question is the part P, I think. No, sorry, this one in the question first. Okay, 1 marks question. 20-meter bridge. Okay, the angle of depression from a boat of a 20-meter high river bridge is 30 meter. Okay, so you are saying that यहाँ पर आपको एक ब्रिज गिवन है और उससे जो बनने वाला एंगल है वो 30 लाइक 30 डिग्री का बन रहा है. तो उसके रेस्पेक्ट में आपका अगेन जो एंगल है वो भी 30 बन जाएगा अल्टरनेट एंगल से.
Okay, so 20 meter angle of depression from 20 meter high of a river bridge. This bridge is height bridge height is 20 meter. Okay, and what is the distance from cover to the bridge? Okay, so what the distance boat, यहाँ पर आपकी एक बोट है, ठीक है, तो उस बोट को यहाँ तक पहुंचना है, लाइक पॉइंट बी पर, दिस वन इज योर ए बी एंड सी. ओके, सो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? लेट सपोज द डिस्टेंस इज योर एक्स. ओके, सो द सॉल्यूशन विल बी योर, लेट ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर. ओके, just a minute. I have to take, okay, so base distance BC, this one is your C, right? BC is equal to x meter. Okay, so 30 will be the answer. Then again use tan theta is equal to P upon B. Then the tan theta is equal to what is perpendicular that you are seeing, pillar or a pole or a height of a bridge is 20 and base is your again x. Then tan theta, the value for theta is your 30 degrees given, then you can place like tan 30 degrees equal to 20 upon x. You will place the value of tan 30 is your 1 by root 3 is equal to 20 upon x, then you will cross multiply this, then you get the answer x is equal to 20 root 3 meter. Okay, so the value for x is equal to 20 root 3 meter. I think it's clear to all. किसी को डाउट है तो कमेंट में अपना जो भी ओपिनियन है वो आप दे सकते हैं, ठीक है, बट आई थिंक इट्स क्लियर to all of you very well, right? Okay, so let me move on the another part. See, okay, so the shadow of a tower standing on a level ground becomes 40 meter longer when the angle of elevation of a sun decrease from 60 to 30. मीन जैसे कि आपको बताया गया है, ए बी एंड सी है और ये एक पॉइंट डी है. क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो, समझ लो, सो यू विल एबल टू आंसर इट. ओके, पार्ट बी के अंदर 10th नंबर पर क्वेश्चन आता है. ये एज इट इज सेम क्वेश्चन आपको मिलता है. यहाँ पर दो एंगल गिवन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज चेंज हो सकती है, बट 2 मार्क्स का क्वेश्चन एज इट इज आपको कॉपी पेस्ट करना होता है. ओके, सो सी द शैडो ऑफ अ टावर. टावर ये जो है वो आपका ए बी है, ए बी जो है वो सेम आपका एक टावर है. ओके, तो लेट्स वी मूव ऑन द नेक्स्ट. लेवल ग्राउंड बिकम 40 meter longer when the angle of elevation sun decreases from 60 to 30. Okay, पहले ये जो एंगल था वो 60 डिग्री था और जब ये 30 डिग्री हुआ तो 40 मीटर लॉन्गर, ये वाला जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर और बढ़ जाता है. तो ये तो आपको पता ही नहीं था, इसको आपने एक्स मान लिया. बिल्कुल सर, क्लियर है. सो द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सी. please attentive during the class. Okay, because this is just a virtual class, I'm not in the front of you, so please maintain the decorum of class. Okay, so here we are seeing that in a triangle, first triangle is a triangle a b d. Okay, again you are seeing जैसा कि आपको दिख रहा है 40 मीटर उसका हाइट है. ओके, सो ए बी डी की मैं बात करता हूं तो उसमें अगेन अप्लाई करता हूं tan थीटा इज इक्वल टू, it's leaking, tan theta degree is equal to P upon B, and the value for theta is your 60 degree. Tan 60 degree is equal to perpendicular is your 40 and B is your x. Tan 60 is your like root 3, then 40 upon x, then what the value for x will be 1 by root 3. Okay, x is equal to 40 upon root 3. Okay, becomes 40 meter is not height. Okay, now this is just arch, so please remove it. This is not a height. Just a minute, I'm just removing it. Okay, so we will use here like h. Okay, h is a variable. Okay, so h upon x root 3 h upon x. Okay, so the value for x is equal to h upon root 3. Clear? Or you can say that h is equal to x root 3. Okay, so this is the equation number 1.
Let me move for the next. Okay, for triangle ABC. Again, you are used tan theta is equal to P upon B. Okay, just a minute, can change. Okay, tan theta value for theta is equal to 30 degree, then value for P. P is your again x and B is your base. Like in for the case of 30, you have to take this BC all. Okay, so we can write like that. What you will write x plus 40. Is it clear? Tan 30 is your 1 by root 3 is equal to h upon x plus 40. You will cross multiply this. What you will get, like x plus 40 is equal to root 3 h. Okay. So now in the question, find the value for h. Okay. So you have to replace where x you can place h. Okay, यहाँ से h कितना निकलता है सर? h का वैल्यू, सॉरी जस्ट अ मिनट, x का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा सर? h अपॉन रूट 3। ओके, आपका इक्वेशन 1 है। यहाँ से इस वैल्यू को उठा के यहाँ प्लेस करो। x का वैल्यू अगर मैं h अपॉन रूट 3 प्लेस करता हूँ तो 40 हो जाता है, इज इक्वल टू रूट 3 h। क्लियर? सो अगेन आगे आप सॉल्व करना है। कैसे कर सकते हैं? जस्ट अ मिनट, देखो एच अपॉन रूट 3, ये वाला वैल्यू उठकर यहाँ आ जाएगा तो बन जाएगा माइनस रूट 3 एच, और ये बन जाएगा 40 के इक्वल अपॉन 1। जस्ट अ मिनट। Okay, so I think it's clear. Okay, again take the LCM is your root 3, then root 3 से root 3 cancel हो जाएगा। just a minute, h और root 3 upon h। okay, root 3 से one time h minus root 3 3h, okay, is equal to 40, and 3 minus 1h is your 2h upon root 3 is equal to 40, and again h is equal to 40 multiply root 3 upon 2, then 220. You got the value for h is equal to 20 root 3 meter. Is it clear? Okay, so अगर आपको यूज वर्दी लगता है, you have to take the screenshot of this. Okay, सो जो है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके पार्ट बी में 22nd फर्स्ट प्लेस पर आने वाले क्वेश्चन है, तो इनको आपको प्रूव करना होता है और उसका जो स्टैंडर्ड है वही आप फॉलो करते हैं, और लास्ट में जाके आप इसका जो फाइनली कंक्लूजन है वो बता देते हैं। ओके, सो जैसा कि आपको दिख रहा है, तो मैं एल एच एस को लेकर चलता हूँ और आर एच एस के इक्वल करूंगा। First, I am taking that LHS. We are solving that LHS. So here we have sin A minus 2 sin QA. Just a minute. Okay. Yes. C sin QA and 3 sin square A upon 2 cos cube A minus cos A. So जैसा आपको दिख रहा है, what we will do for solving this, न्यूमरेटर अगर आप देखते हैं तो साइन ए तो ऊपर से कॉमन आता है, और नीचे वाले की बात करते हैं तो उसमें कॉस से छोटी पावर है वो कॉमन आ जाता है। अगर मैं साइन ए कॉमन लेता हूँ तो ऊपर मेरा रह जाता है लाइक 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे वाले में लेता हूँ तो कॉस ए कॉमन लेता हूँ तो मेरा आता है 2 cos square a minus 1. Okay, another identity that we know very well is your sine square theta plus cos square theta is equal to 1. So we can write like that: sine square theta is equal to 1 minus cos square theta. Is it clear? Okay, so I can place sine square theta is your 1 minus cos square theta. Cos square theta is equal to 1 minus sine square theta. Okay, just a minute. Okay, see, if I place that sine A upon cos A is your 1 minus 2 sin square theta को मैं लिख सकता हूँ कि 1 minus cos square A upon, अगेन cos square को मैं लिख सकता हूँ 1 minus sin square A
minus 1. Is it clear? Okay, so let me move on the next. See, okay, here we have sin a upon cos a, ऊपर में रहता है 1 माइनस 2, और ये 2 अगेन इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 2 cos स्क्वायर a. Clear? Okay, so in this part is your like 2 minus 2 sin square a and 1 minus 2 sin square a minus 1, right? Is it clear? So let's check. Sin a upon cos a, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो 2 माइनस 1 इज योर क्या हो जाएगा, माइनस 1, तो आई कैन राइट 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इस 2 में से ये 1 गया तो माइनस 1 आ गया, जिसको मैंने पीछे लिख दिया, राइट? और अगेन मैं देखता हूँ, ये रहा 2 और ये रहा 1, 2 माइनस 1 इज योर अगेन 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। क्लियर है? ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यस, सो नॉट विजिबल, जस्ट अ मिनट। ओके, सी, so now again write like sin a upon cos a. Okay, so टू cos स्क्वायर a को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos a को क्या लिख सकता हूँ सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, और माइनस 1 हो गया। ओके, और नीचे रह गया मेरा क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इज इट क्लियर? Okay, just a minute. See, now the last step, what we have to do now. See, okay, see, sin A minus, then this 2 multiply, just a minute, where is the pointer? Okay, 2, this 2 multiply sin A upon cos A, and this 2 multiply to this 1, then you got like 2 minus 2 sin square a minus 1। इज इट क्लियर? ओके, और नीचे जो है आपका ऑलरेडी डिनोमिनेटर था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। क्लियर दैट? ओके, so in the next step what you will get, you get that, just a minute, sin a upon cos a, 2 minus 1 is your again 1 minus 2 sin square a, or same denominator is your 1 minus 2 sin square a. Is it clear? Now you can easily cancel this term like 1 minus 2 sin square a to this 1 minus 2 sin square a. Then you say that sin a upon cos a, and sin theta upon cos theta is equal to tan theta is your a. Then you can see that LHS is equal to RHS. Hence proved. Is it clear? ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन, और कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे बता देना कमेंट में एंड ऑल, जैसे भी आपको कम कन्वीनियंट लगे। नेक्स्ट वी हैव अनदर क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, सो हाउ कैन वी सॉल्व इट? सी द क्वेश्चन, here we have like cos a upon 1 plus sin a, this one is your sin, okay, sin, okay, just a minute. So in this question we will take common like 1 plus sin a and cos a. Okay, 1 plus sin a and cos a, you are taking the LHS. Okay, so if you divide this, then you will got that cos a square plus, यहाँ cos cancel होता है तो 1 plus sin a whole square. Clear? And the next step, just a minute. See, okay, wait. Hmm. See, cos square a plus b is whole square, identity is your 1 square plus sin square a plus 2 sin a. You are using a plus b's whole square in this. Okay, then what you have, cos a plus 1 plus sin a. Clear? Okay, in the next step we know that, what you know, so sin is cos square theta plus sin square theta is your 1. Then I can place
just 1, then this one, okay, plus 2 sine A, okay, upon cos A 1 plus sine A. Is it clear? क्या है, clear है आपको? Okay, so let me move on to another part. See, 1 plus 1 is your 2, then 2 plus 2 sine A upon cos A 1 plus sine A. Clear? Okay, so next just see. Okay, if you are taking 2 common from the numerator, then the left part is your 1 plus sine A, right? And in the denominator is your cos A 1 plus sine A, right? Okay, so now you can easily cancel this 1 plus sine A to this 1 plus sine A, then you got that 2 upon cos A, okay, and you will split these, then you got like 1 upon cos A, and we know that 1 upon cos A is your sec A, and you got 2 sec A. It's the final conclusion that we are going to prove. Just a minute. See, then what you will write, like LHS is equal to RHS and hence prove. सो स्टूडेंट, ये आपका प्रूव हो गया है, और यही जो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन जो आपने अभी अब डिस्कस किए हैं, सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के क्राइटेरिया से. सो यू हैव टू फॉलो ऑल द स्टेप्स वन बाय वन क्लियरली, और यही सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो. डिजिट चेंज हो सकता है, बट टेक्नोमेट्री के यही इसी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, एंड प्लीज प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन. और इसी की जो टेक्नोमेट्री के अलावा जो नेक्स्ट सीरीज है आपका स्टैट्स का है, टिग्नोमेट्री आई थिंक 13 मार्क्स का आपके एग्जामिनेशन के क्राइटेरिया से इंपॉर्टेंट है. तो अगर कोई क्लियर करना चाहता है एग्जाम को, तो 13 मार्क्स अगर ये अच्छे से कर लेता है तो 13 मार्क्स he or she can got easily. Okay, in the next part we will discuss about the stats, और जो next series है इसकी मैं जल्दी अपलोड कर लूंगा आपके एग्जाम से पहले. सो प्लीज अगर किसी को एग्जाम क्लियर करना है तो इन सब चीजों को फॉलो कर लेना. थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर ऑल. Okay, so we will meet in our next session. Thank you.